चलो कैलोरीमेट्री का और एक असाइनमेंट बेटा। The specific heat of a substance is infinity. It means heat is given out, heat is taken in. No change in temperature take place whether heat is given in or given out, all the above. Heat का फॉर्मूला क्या है बेटा? Heat का फॉर्मूला है Q is equals to m into S into delta theta, isn't it? तो अब इसने बोला specific heat of a substance is infinity यानी S. S value is equals to क्या लिख सकता हूँ मैं? Q divided by m into delta theta. रोटी होना है दिखा तो नहीं है ना? नहीं दिखा। डन बेटा, चलो 1 मिनट में था। हाँ, तो अब इसने बोला स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इज इन्फिनिटी यानी S इन्फिनिटी है। अगर S इन्फिनिटी है तो ये हो गया Q डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा थीटा, है क्या नहीं? तो अब क्या हो जाएगा बताइए? अगर अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? 0। So theta t is right now for me 0. If theta is 0, that means heat is heat transfer क्या कुछ भी नहीं है ना बेटा? So heat is been taken out or heat is given out. No change in the temperature take place whether heat is taken in or given out. क्या होगा बताइए? Temperature is 0 है ना बेटा? So there will be no change in temperature. It will take place whether heat is given or heat is taken out. So C will be the best option for this. क्योंकि temperature ही नहीं है वहाँ पर, कुछ पैदा ही नहीं होगा. Next one. 540 calorie or 540 gram of ice at 0 degree Celsius mixed with 540 gram of water at 8. ये अभी के हम लोग 0 degree Celsius. Direct question. Next one. Heat required to convert 1 gram of ice at 0 degree Celsius into steam at your 100 degree Celsius will be equal to how much? करो जल्दी से. Heat required to convert 1 gram of ice. So 1 gram of ice at 0 degree Celsius will convert into 1 gram of water, 1 gram of water at 0 degree Celsius, isn't it? Is converted into 1 gram of ice at 0 degree Celsius into steam at your 100 degree Celsius. So this will cover to 1 gram of water at 100 degree Celsius. Then this will go to 1 gram of steam at 100 degree Celsius. इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी बताइए जल्दी से? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए Q1, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए Q2 और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए Q3. So if I'm writing the Q value right now, so Q value will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. So Q1 will be equal to how much for me beta? 1 gram, 1 into latent heat. Latent heat is right now for me 80 plus 1. Specific heat of water is also 1 into 0 से 100 जा रहे हैं तो 100 minus 0 plus mass of the water is 1 into this one will become for me 536 दे रखा है तो latent heat of steam 540 मत लेना, is given in the problem as 536. इसको कर लो, that will give me the answer 80 plus 100 plus 536. So that will be equal to 636 plus 8, that will be equal to 716 calories. Sure, next one. 80 gram of water at 30 degrees Celsius are poured into a large block of ice at 0 degrees Celsius. The mass of ice that melts will be equal to how much? 80 gram of water at 30 degrees Celsius is poured onto the large block of ice at 0 degrees Celsius. The mass of ice, तो मेरे पास mass of ice नहीं मालूम, मान के चलो m gram लेता हूँ. So I can write here right now, heat lost must be equal to heat gain. Heat will be lost by what beta? Water at 30 degrees Celsius and gained by the ice, isn't it?
सो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ हीट लॉस के लिए 80 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इनटू ये हो जाएगा 30 माइनस 0 मास ऑफ वाटर स्टीम आइस इज m latent heat is 80 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है ना बेटा सो इट इज योर 80 into your 30 is equals to your 80 into your m this 80 चले जाएगा तो mass will be equal to how much will be 30 grams. Sure. Next one. 50 gram of copper is been heated to increase its temperature by 10 degrees Celsius. If same quantity of heat is given to 10 gram of water, the rise in the temperature is how much? So दोनों का same amount of the heat is been given, and amount of heat given to the copper is equals to amount of the heat given to the water. ठीक है? So mass of copper, specific heat of your copper into temperature of your copper will be equal to mass of water, specific heat of water into temperature of water. तो क्या पूछ रहा है? The rising temperature, the same quantity of heat is given to 10 gram of water. The rise in its temperature, यानी temperature of water कितना rise होगा? Delta theta of your water will be equal to specific heat of copper, mass of copper into temperature of your copper divided by mass of water into specific heat of water. So mass of copper 50 gram है, so 50 into 10 power minus 3. Specific heat of your copper is given as of your 420. So it is 420 into your 10. उसके बाद temperature कितना दे रखा है 10 divided by mass of water. Mass of water कितना है बेटा 10 grams. So it is your 10 into 10 power minus 3 into specific heat of water. Specific heat of water will be 1 in your कैलोरीज, बट मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया है क्योंकि स्पेसिफिक हीट दे रखा है एसआई सिस्टम में, तो मैंने मास को भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 नहीं होगा, बट इट विल बी 4200। ठीक है ना? तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर। 10 पावर 3 चले गया, 10 पावर 3 चले गया, ये 0 और ये 0 चले गया, तो यहाँ पर एक 0, यहाँ पर एक 0, यहाँ पर एक 0, यहाँ पर एक 0 चले गया, तो ये चले गया 42 और ये 42 भी चले गया, तो ये आ जाएगा 5 डिग्री। क्लियर है? थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक करने के चांसेस है बच्चे। हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो ये ग्राम में है, लेकिन जॉल की वैल्यू जो है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर जो है ना, जॉल केजी में है, यानी एसआई सिस्टम में। तो पूरों को एक ही सिस्टम में लाने की कोशिश कर लेना है कभी भी। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। Two liquids A and B are at 32 and 24. When mixed in the equal masses, the temperature of the mixture is found to be 28. Specific heat of this one will be equal to how much? The mixture का temperature निकालने का तरीका बेटा, that will be equal to your, this will be equal to your, अब दोनों का masses क्या? Two liquids A and B are at 32 mixed with equal masses same है यहाँ पर, तो temperature of the mixture will be equal to your how much? ये हो जाएगा, मासेस सेम है तो इसका टेम्परेचर लिख रहा हूँ, टेम्परेचर ऑफ योर ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ योर ए प्लस टेम्परेचर ऑफ योर बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ योर बी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ योर ए प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ योर बी। तो दोनों का मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है 28। This 28 will be equal to your 32 का टेम्परेचर है। Incoming voice call +918 8154701। तो ये हो गया 32 और स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस वन इज गिवन एज ऑफ योर ए प्लस इसका टेम्परेचर कितना है 24 इनटू इसका स्पेसिफिक हीट कितना है बेटा एस बी डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू योर एस ए प्लस ऑफ योर एस बी।
इसको सिंप्लीफाई कर लो. So this will be equal to, कर रहा हूँ देखिए, 28 into specific heat of your A plus specific heat of your B will be equal to 32 times of specific heat of your A plus 24 times of specific heat of your B. यानी ये बन जाएगा 28 into specific heat of your A plus 28 into specific heat of your B is equals to 32 into specific heat of your A plus 24 into specific heat of your B. All A terms और B terms को एक जगह रख लीजिए. So what I'll do is 28 specific heat of your A, ये इधर आ जाएगा तो 28 SB I'll keep here right now. 28 specific heat of the B यहीं पर होगा. So that will be minus 24 times of specific heat of B, that will be equal to 32 times of specific heat of your A minus 28 times of the specific heat of your A. Incoming voice call from +918-4815. हाँ बेटा, ये बन गया 4 times of specific heat of the B और ये हो गया कितना आ रहा बेटा रेशियो 4 times of the specific heat of your A. ये वाला चलेगा तो दोनों का रेशियो आ जाएगा SB is equals to ऐसे, यानी 1:1 आ जाएगा. हाँ चलो नेक्स्ट वन करें. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. A liquid of mass m and specific heat C is been heated to a temperature 2T. Another liquid of mass m/2 and specific heat 2C is heated to a temperature T. If these two liquids are mixed, the resulting temperature of the mixture, मैंने अभी आपको कराया था इससे पहले, resulting temperature निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला, this will be equal to your m1 s1 into theta 1 plus em2 s2 theta 2 divided by your, this will be equal to your m1 s1 plus of your m2 s2. तो फर्स्ट वन का मास है m, स्पेसिफिक हीट है मेरे पास C, इनटू टेम्परेचर है मेरे पास 2T. नेक्स्ट वन का है मास m/2, स्पेसिफिक हीट है 2C, इनटू टेम्परेचर है कितना T, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मास है m इनटू स्पेसिफिक हीट है C प्लस m/2 इनटू योर 2C. कितना आ रहा देखो, ये 2 और ये 2 चले जाएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 भी चले जाएगा. सो इट इज योर 2mc इनटू T plus of your mc into your T divided by, this will be equal to your 2mc, and this will be equal to mc cut क्या है, this is 3T divided by 2, 3T divided by 2, fourth option, 3/2. Next one. If temperature scale is changed from degree Celsius to Fahrenheit scale, the numerical value of the specific heat will be equal to your how much? बताइए. डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा. डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट सेल्सियस को लिखना. ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है बेटा, Q divided by m into delta theta. यानी टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट. तो आपको मालूम है टेम्परेचर ऑफ योर फॉरेन हीट विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ योर डिग्री सेल्सियस, isn't it? So I can say that degree Celsius का जो scale reading है that will be lesser than Fahrenheit scale, so it will decrease. Inversely proportional है ना. Very good. Next question. A bullet moving with a uniform velocity v stops suddenly after hitting the target, and the whole mass of melts by your m. Specific heat is, initial temperature is 25 degrees Celsius, melting point is 475 degrees Celsius, latent heat is L, then V is given by how much? जोसला लगा लो, आराम से निकल जाएगा. W is equals to J into Q. Kinetic energy है, conversion हो रहा, तो half into m into V square will be equal to J into. So यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, hitting the whole mass is being spread if the initial temperature is 25 and melting point is 475 degrees Celsius.
और latent heat दे रखा है L, यानी Q value will be equal to your m into S into temperature difference plus m into latent heat लिखना पड़ेगा, यानी this will be equal to your J into your, this one is right now m into your S into ये temperature कितना हो जाएगा, ये कितना होगा बताइए, टेम्परेचर इज 475 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है 25 प्लस ये हो गया m इंटू योर L, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2j विल बी इक्वल टू योर m कॉमन हो गया, इसलिए स्पेसिफिक हीट तो कॉमन ही है बेसिकली यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पेसिफिक लिखता हूँ s इंटू 475 माइनस 25 प्लस m इंटू योर L, तो ऑप्शन मैच कर रहा है, m v स्क्वायर इंटू योर j 9 m is 475 minus 25 plus ml mv square by 2, second option. Done. Next one. Waterfall is 84 meter high. If the half of the potential energy of the falling water gets converts into the heat, the rise in the temperature of the water will be equal to how much? Take a pen and try to do it better on your own. Potential energy will be converting into heat energy. W is equals to J into Q. It is mg into your h will be equal to J into Q. Q is equals to ms into delta theta. So temperature difference will be delta theta is equals to G into your h, a mass gets cancelled, divided by your J into your s. ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका, डायरेक्टली आप सब कुछ दे रखा है, just substitute and get the answer for this. $84 meters height दे रखा है. So this is an SI system. Half of the potential energy of the falling body is being converted into half of the potential energy, यानी ये कितना होना चाहिए by 2, यानी यहाँ पर ये जब कितना आ जाएगा 2, है ना, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इधर चले जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, that will be equal to your half into specific heat of water कितना है बेटा, specific heat of water will be equal to your 1000 calorie per kg डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो G की वैल्यू डिवाइडेड बाय J इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कभी भी याद रखो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 0.0023, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 9.8 डिवाइडेड बाय J की वैल्यू डाल दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डाल दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है तो विल बी गेटिंग 0.0023, यानी दिस विल बी इक्वल टू हाफ 0.0023 into height is your 84, इसको कर लो कितना आ जाएगा, 2 1s are 2 2 4s are 8 2 2s are 42 into 0.023, यानी this will be equal to 42 into 2.3, यानी 0.098 degrees Celsius. टेक केयर ऑफ कैलकुलेशन बेटा, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस बहुत वाइड है इसके अंदर. Done. Next one. The latent heat of vaporization of a substance is always greater than its latent heat of fusion, greater than its latent heat of sublimation, equal to its latent heat of sublimation, and less than sublimation. मतलब क्या बेटा, conversion of one state to another state directly. Okay. देखो, the latent heat of vaporization is always greater than the latent heat of fusion because liquid vapor phase में जो change होता है ना, there will be large increase in volume. Hence, more heat has been required comparison to the solid or liquid phase के अंदर जो भी रहता, तो it will be greater in the latent heat of your fusion.
So latent heat of evaporation of substance is always greater than the latent heat of your fusion. Okay. So next. When vapor condenses into the liquid, AB theory question अच्छा वाला. When vapor is condensing into your liquid, तो क्या हो जाएगा? In vapor to liquid phase transition, heat कभी भी क्या होता है? Liberate होता है. So there will be liberation of your heat. When vapor is condensing into the liquid, तो ठंडा हो रहा है ना बेटा, तो बाहर देगा. So obviously it will liberate the heat for that. So next one. 100 gram of ice at 0 degrees Celsius mixed with 100 grams of water at 100 degrees Celsius. What will be the final temperature of your mixture? I hope you can directly do this one. वो shortcut form में जो बताया था मैं उससे लिख दो. Temperature of the mixture will be equal to your mixed with 100 gram of water at 100 degrees Celsius. What will be the final temperature? कर ही लेता नहीं तो कर. 100 gram of ice at 0 degrees Celsius. यानी ice at 0 degrees Celsius is mixed with 100 grams of water. Is mixed with your 100 grams of your water at 100 degrees Celsius. What will be the final temperature? मान के चलो this ice will come to water at 0 degrees Celsius. M into L of your ice. Water will come to water at some T temperature. This 100 gram of water will also come to the water at T degrees Celsius. यानी यहाँ पर हो जाएगा 100 into specific heat of water into your 100 minus of your T होगा. और यहाँ से यहाँ तक घंटे यहाँ पर हो गया m into specific heat of water 1 into T minus 0 हो जाएगा. यानी heat gained must be equal to heat lost. Heat is gained by the ice. So this is mass of ice, latent heat of ice plus mass of water into your T. That will be equal to your 100 into your 100 minus T. तो यहाँ पर mass कितना दे रखा है बेटा? Mass of your ice is given as of your 100. So mass of this one is 100. Latent heat of this one is 540. Plus this one is also your 100 into temperature T is equals to your 100 into 100 minus 100 into your T. ठीक है? पूरा T टर्म्स एक जगह ले लो, बाकी टर्म्स एक जगह ले लो, and try to simplify by the value of T. देखो कितना आ रहा? Sorry, ये latent heat of ice कितना होता है? 80 होता है. Sorry. ये कितना आएगा बेटा? 8000 प्लस ये हो जाएगा 10,000 is equals to ये कितना हो जाएगा? माइनस 100 into T और ये इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 100 into T and this will be equal to minus 200 into your T. ठीक है ना? कितना आ रहा है बेटा? 2 zeros चले जाएंगे. So T will be equal to your 180 divided by 2. कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ. So 10 degrees. गलत किया क्या मैंने? 100 grams of ice at 0 degrees Celsius mixed with 100 grams of water at 100 degrees Celsius. What will be the final temperature of the mixture? बराबर क्या है? कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया होगा. देखो एक बार. Ice at 0 degrees Celsius is mixed with, so it will come to the water at 0 degrees Celsius. 2000 divided by 200. हाँ तो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक किया. तो मास इज राइट ना यहाँ पर 100 into your ये हो गया 80 प्लस ये हो गया 100 into your T is equals to this one is right now for me 10,000 minus ये हो गया 100 into T. So this one is right now 8,000. ये हो गया sorry हाँ ये हो गया minus of your 10,000 that is equals to minus 100 into T minus 100 into T. ये हो गया minus 200 into T. This will be minus of 2000.
माइनस माइनस चले गया, 2 0 से 2 0 चले गए, 2 1s are 2 10s are, so T will be equal to your 10 degrees Celsius. Sure. Next one. A beaker contains 200 grams of water. The heat capacity of the beaker is equal to that of 20 grams of water. The initial temperature of water in the beaker is 20 degrees Celsius. If 440 grams of hot water at 92 degrees Celsius is poured in it, the final temperature, neglecting the radiation loss, will be nearest to your how much? करोगे कोई? A beaker contains, this is your beaker. This beaker contains 200 grams of water. 200 grams of water. Heat capacity of the beaker. Heat capacity matlab M into S of the beaker is equals to 20 gram of water. The initial temperature of the water in the beaker, यानी इन दोनों का temperature कितना है? 20 degree Celsius. 440 grams of hot water at 92 degree Celsius is poured into this one. तो इसके अंदर अभी मैं क्या कर रहा हूँ? 440 grams of water at 90 degree Celsius डाल रहा हूँ. तो यानी this will lose heat and water and calorimeter will gain. ठीक है ना? So I can write here right now, heat lost by hot water, heat lost by hot water. ये वाला क्लास में करवाया था मैंने. Hot water will be equal to your heat gained by water plus beaker या calorimeter आप बोल सकते हो. तो heat lost by hot water कितना है? 440 into specific heat of water is nothing but 1 into temperature 92 से common temperature पे आ रहा मान के चलो 90. ये हो गया water 200 into this will also theta minus 20 क्योंकि specific heat of water is 1 plus m into s of the beaker is 20 into again this one is theta minus 20 क्योंकि it is gaining ना तो higher temperature पे आ जाएगा. ठीक है ना? तो 10 यहाँ पर 10 चले जाएगा. So it is 44 into 92 minus theta is equals to your. So this one is a 20. Theta minus 20 will be common. यानी 20 plus 20 into your theta minus of your 20. यानी ये हो गया 40 into your theta minus of your 20. तो ये हो गया 44 into 92 minus theta. उसको simplify कर लीजिए, you'll get the answer. Narrow. So this is 22 into 92 minus 22 into theta is equals to 20 into theta minus 20 into 20. All the theta terms एक जगह ले लो. So it is 22 into 92 plus this will be 400, that is equals to 20 into theta minus it will become for me plus 22 into theta. ये हो जाएगा 42 into your theta. 42 into your theta. ठीक है ना? तो कर लो कितना आ रहा है देखो. (22 into 92 कितना है बेटा? 2024 है प्लस 400. इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ. ये कितना हो गया? 42 into थीटा. ये 2024 कितना बन जाएगा बेटा? 2424 is equals to 42 into थीटा. तो थीटा हो गया मेरे पास 2424 डिवाइडेड बाय 42. अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा? 57.7 यानी 58 तक आ जाए. कैलकुलेशन देखो एक बार. बी आ रहा है. मैंने कैलकुलेशन पे मिस्टेक किया होगा. कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? देखो मैंने बराबर तो लिखा है ना. 440 into 92 minus theta is equals to 200 into theta minus 20 into 20 into theta minus of 20. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना फिर से. हाँ, की में 68 दे रखा है बेटा. मैंने शायद अपना कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा. देखो कितना आ रहा है.
थीटा माइनस 20, थीटा माइनस 20 कॉमन है, तो 20 प्लस 20 40, फिर हो गया 40 इंटू थीटा माइनस 20, और ये हो गया 44 इंटू 92 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 10 में, ये हो जाएगा 11 में, तो ये हो जाएगा बराबर है क्या ना, सो 11 इंटू 92 कितना आ रहा बेटा, 1012 minus 11 into theta, that is your 10 into theta, minus 10 into 2, that is 20 into theta. तो 1012 माइनस आ जाएगा तो कितना आ रहा है, थीटा 2 बार आ रहा है यहाँ पर, 90 माइनस ऑफ थीटा ही है, बराबर ही है ना, 440 92 माइनस 220 220, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर क्रॉस नहीं जाएगा, नहीं सही मिस्टेक किया मैंने कैलकुलेशन। यहाँ पर कितना था 440 इंटू 1, और यहाँ पर कितना था, ये कितना अमाउंट ऑफ वाटर था 200, so 200 the specific heat of water is 1। हाँ, तो अगर यहाँ 0 तो यहाँ 0 निकालो, यहाँ 0 निकालो, यहाँ 0 निकालो, बराबर है, so it is 44 into 92 minus 44 into your theta is equals to 20 into theta minus of your 20 into 20 प्लस ये हो जाएगा 2 into theta minus of your 2 into theta 20। हाँ, इसमें से अब थीटा निकालो आ जाएगा, ठीक है, बराबर 68 डिग्री सेल्सियस। देखो टाइप कैलकुलेशन कर लो ना, क्या 440 इंटू 92 माइनस थीटा, तो यहाँ पर इज 200, तो एवरीवेयर 0 0 चले गया, ये हो गया 44 इंटू 92 माइनस थीटा, और ये हो गया 20 इंटू थीटा माइनस 20, यहाँ पर भी थीटा माइनस 20, यहाँ पर थीटा माइनस 20 अगर मैं कॉमन भी ले लूँ तो सीधा एक ही स्टेप में हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको देखो और थीटा माइनस 20 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 20 प्लस ऑफ योर 2, यानी ये हो जाएगा 22 इंटू थीटा माइनस ऑफ योर 2 थीटा, थीटा माइनस 20 सॉरी, थीटा माइनस 20 सॉरी, तो ये हो जाएगा 444 इंटू योर 1992, ये कितना आ रहा है देखो बेटा, 44 इंटू 92, 4 2 8 4 2 8 4048 माइनस 44 इंटू थीटा, ठीक है, कर लोगे ना अभी, all the theta terms एक जगह ले लो, it is 22 into theta minus 22 into your 20, yeah, so this one is 22 into theta minus of 440, so ये 4048 minus 44 into theta, तो ये हो जाएगा 4048 plus 440, that will be equal to 22 into theta plus 44 into theta, so this will be तो ये कितना आ रहा है देखो बेटा, 4488, ये 22 प्लस 44 कितना हो जाएगा 66 इंटू थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल टू 4488 डिवाइडेड बाय 66, तो कितना आ जाएगा 68 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, चलो next one, a body of mass 5 kg falls from a height of 30 meters, if its all mechanical energy is converted into heat, then heat produced will be equal to how much, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, W is equals to J into Q का फॉर्म निकालो,
It is from a certain height, so mg into h will be equal to j into q. तो q की वैल्यू हो जाएगी बेटा mg into h divided by j. तो मास कितना दे रखा है 5, g की वैल्यू 9.8 into height is nothing but 30. तो j की वैल्यू 1 नहीं होगी, यहाँ पर 4.2 होगी. That will be equal to 350 calories. Right question. ठीक है. Next question. A lead bullet of 10 gram traveling at 300 meter per second strikes against a block of wood and comes to rest. Assuming 50% of heat is observed by the bullet, the increase in its temperature will be equal to how much? Again, same formula. W is equals to J into Q. Kinetic energy है 50%. So 50% of your kinetic energy, of its kinetic energy, यानी half mv square will be equal to your J into ms into your delta theta. Isn't it? Yani this will be equal to 1 by 2 into 1 by 2 m into v square. J value will be equal to 1 into ms into delta theta. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. So delta theta will be equal to how much? A mass चले गया. So this will be equal to 4. This will be v square divided by 4 into s. Velocity is given as 300 into 300 divided by 4 into specific heat of this one is given as 150. So simplify कर लो, that will give me the answer. 150. Very good. 150 degrees Celsius. Next one. How many grams of liquid of specific heat 0.2 at temperature 40 degrees Celsius must be mixed with 100 grams of liquid of specific heat 0.5 at 20 degrees Celsius so that the final temperature of the mixture becomes 32. Mixture का formula लिख लो ना बेटा directly. Theta of your mixture will be equal to your m1 s1 theta 1 plus m2 s2 theta 2 divided by your m1 s1 plus of your m2 s2. So temperature of mixture इसने दे रखा है 32. That will be equal to m1. Specific heat of this one is given as of your 0.2 into temperature is given as of your 40. Plus ये हो गया मेरे पास 100 into your 0.5 into your 20 divided by your m1. This is m1 into ये हो गया 0.2 plus this one is your 100 into 0.5. So just do the calculation. You will get the value of m1 from this. I'm doing the calculation for you. Just take care of that calculation. Next one. अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है. 3 liquids of masses m1, m2, m3 are being thoroughly mixed if the specific heats are C1, C2, C3 and the temperatures are T1, T2, T3. Then the temperature of the mixture will be equal to how much? 3 terms में आना चाहिए. Temperature of the mixture will be equal to your m1 C1 T1 plus of your m2 C2 T2 plus of your m3 C3 T3 divided by your पूरों के masses, that is m1 C1 plus m2 C2 plus m3 C3. Directly you can write this one. So what option is the answer for this one? Second option. Very good. Next one. 50 gram of ice at 0 degrees Celsius in insulator vessel, 50 grams of water at 100 degrees Celsius is mixed in it. And final temperature of the mixture